Hello everyone, welcome to Apti Academy for Civil Services. It's a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 30th of March. The first news is US Deputy NSA, that is National Security Advisor, to visit India ahead of 2+2 dialogue, something very important. Second, massive fire in Sharika Tiger Reserve. We'll see how the Sariska Tiger Reserve is prone to fire. Third, India sees closer BIMSTEC partnership. So this is an ongoing meeting which is held with regards to the BIMSTEC. Second last, center undecided on mixing the vaccines. And the last is an editorial, unreformable criminal justice system. We'll see the detail about this editorial as well. Apart from this, there would be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about the upcoming prelims test series for the upcoming examination, there are 60 high quality tests that we are providing. So you can register for this particular course. The link is there in the description down below. आप वहाँ से link check करें and you can register yourself. The first news of the day, that is US Deputy NSA to visit India ahead of 2+2 dialogue, something which is important for General Studies Paper 2 in mains, bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. So 2+2 की dialogue होनी है 11th April से. Before that, the United States के जो Deputy National Security Advisor, he is making a visit to India, right? And he has played a key role in sanctioning the Russia amid the invasion over Ukraine. तो ये एक ऐसे individual है जिन्होंने पूरी sanctions को design किया है, उसको formulate किया है that how the sanctions should go, right? So he's representing the US government and he's an Indian origin, right? तो एक काफी important aspects होगी जहाँ पे 2+2 dialogue से पहले एक meeting हो रही है, right? And the 2+2 dialogue is scheduled to held on 11th of April 2022. 2+2 dialogue है क्या? Something very basics that you must know for the prelims examination. So this refers to the mechanism between two nations where two appointed ministers from each country meet to discuss their strategic and security interest. तो हर एक country से दो एक individual जो ministers होते हैं वो appoint किए जाते हैं and they discuss the matter for their bilateral relationship, which is again concerning both countries, right? And the goal is to enhance high level engagement, चाहे वो bilateral issues हो, regional issues हो या global issues हो. These three issues are taken into consideration in 2+2 dialogue. So this time 2+2 dialogue is going to take place between India and the United States of America. So India and USA has established 2+2 ministerial dialogue in June 2017 actually. This is way back in 2017. So far there has been 3 rounds of talk. 2+2 की बात करें तो 3 राउंड की टॉक ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं एंड दिस हैज आल्सो सीन इम्प्रूवमेंट इन द इंस्ट्रूमेंटल वेयर द यूएस डिफेंस फाउंडेशन पैक्ट हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड इन अ लॉन्गर रन. नाउ इस बार की जो मीटिंग होनी है जहाँ पे जो डेप्यूटी एनएसए इज विजिटिंग इंडिया, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ मीटिंग? So some of the important agenda include that they need to have a deepened cooperations to promote inclusive growth, prosperity, free and Indo-Pacific region. अगर क्वाड ग्रुपिंग की बात करें, क्वाड में भी ये बातें दोहराई गई है that Indo-Pacific is something which is pivotal for the country, member countries, and no neutrality of trade should be promoted in the region. This is what has been advocated from the quad members itself. या फिर उसके बाद और भी बात करें, यूएस ने भी इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी reiterate किया. Now the meeting is expected to discuss the range of issues that is concerning US and India in terms of economic relationship and strategic partnership, right? तो current जिस तरह से ongoing crisis है यूक्रेन में, जहाँ पे रशिया ने recently invasion किया है यूक्रेन को, so that issue is going to be also discussed because it has impacted the global economy. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी repercussion यूक्रेन और रशिया में दिखी है, because the crude oil which is being imported from these two countries has definitely impacted the inflation rate in most of the countries. Now discussion will also be there in terms of high quality infrastructure जहाँ पे build black better world development और Indo-Pacific economic framework की भी बात की जाएगी. This is all agenda that is going to be discussed with the
NSA, Deputy NSA and its counterpart in India और External Affairs Minister के साथ मीटिंग होनी है. Now, in that context, one thing is important that Russia Foreign Minister is also visiting India, right? So ये एक ऐसी विजिट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी. एक तरफ तो यूएस के डेप्यूटी एनएसए आ रहे हैं इंडिया में, जहाँ दे आर कंसर्न अबाउट Russia's action, and at the same time this visitor also there, right? So this is creating an interest of conflict as well. So it is expected to arrive on India on 31st of March. ये 2-day visit पे है. He is coming from China and he will hold the bilateral dialogue or talks, you can say, participating in the meeting between the foreign minister of Afghanistan and the neighboring countries. And neither India nor Russia has officially announced about the Russia foreign minister, Mr. Lavrov, is visiting India. इसके बारे में official confirmation अब आई है. इससे पहले clarification नहीं थी. There were no official confirmation coming with this regard, right? And he will be meeting his counterpart on 1st of April, that is 2022. Now you can see this data, basically ये किस तरह से पूरे वीक और लास्ट वीक में क्या क्या चीज़ें होनी हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं. दिस इज मेंशन ओवर हियर. इफ यू आर रीडिंग हिंदू यू कैन इजीली फाइंड दिस. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड आउट द एंटायर कंटेंट. Now, massive fire in Sariska Tiger Reserve, something very concerning for our Indian forest. And ये एक ऐसी टॉपिक है जहाँ पे यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में सवाल ज़रूर पूछेगी कि फॉरेस्ट फायर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण रहे हैं रिसेंट के टाइम में. So this particular topic is important for General Studies Paper 3, Conservation, Environmental Pollution, Degradation and basically EIA, that is Environmental Impact Assessment. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो राजस्थान की, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, इट हैज़ undergone and it has seen a huge fire outbreak. And as per the report, fire which is erupted on the Monday evening has now spread over 10 square kilometer. So it's a good number. काफ़ी बड़ी एरिया है जो कवर हो चुकी है फायर में. So forest official has also said that almost 150 to 200 people, including forest staff, are engaged in controlling the fire. So these are the efforts made at the ground. और इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है इसमें, जहाँ पे वो वाटर स्प्रे कर रहे हैं टू कंट्रोल द इंटायर फायरिंग विच हैज एक्सपैंडेड टू नन लेस देन 10 स्क्वायर किलोमीटर्स. नाउ थ्रेट टू टाइगर्स, डेफिनेटली सरिस्का टाइगर रिजर्व इज अ टाइगर रिजर्व. और फॉरेस्ट ऑफिशियल का कहना है कि एटलीस्ट 9 टाइगर्स इंक्लूडिंग कप्स आर नोन टू मूव अराउंड दिस एरिया विच वुड बी इम्पैक्टेड बाय द फायर, राइट. सरिस्का टाइगर में टोटल 27 टाइगर्स हैं एंड अराउंड 9 इंक्लूड, इसमें 4 adult tiger हैं, tigress हैं, 5 cubs and adults and other moving around this area. Now, India is home to 75% of the world tiger population. This is something important point you must note for prelims and mains examination. और एक चीज़ के एडवांटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो टाइगर है, जिस तरह की फॉरेस्ट होती है, जब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में आग लगती है या फायर होती है, उस टाइम पे जो बड़े एनिमल है वो तो भाग निकलते हैं, बट जो खास करके रेप्टाइल्स फैमिली के जो हैं या फिर छोटे एनिमल हैं, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है बिकॉज दे मोस्टली डाई, बिकॉज फायर विच इज कैचिंग द ग्राउंड इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग दिस ट्रॉपिकल रीजन में. जो रेप्टाइल्स हैं या फिर जो छोटे एनिमल्स हैं उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा रिपोर्ट होती है कंपेयर टू द बिगर कैट्स और लायन और टाइगर्स. रीज़न फॉर फॉरेस्ट फायर स्पेसिफिकली, अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें, क्यों यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई है. So this Sariska Tiger Reserve is a tropical dry forest, right? And this is mostly prone to because they contain high fuel, right? High fuel content होती है. And this time the जो Tiger Sariska Reserve है, they have spread over from top to the hill, right? तो अभी जो शुरुआत हुई है, that is from the top of the hill. And Indian forest fire is commonly reported in March. Generally देखी जाए, जो forest fire होती है वो मार्च और अप्रैल के महीने में ही अक्सर होती है, right? And the quantities of the dry wood, basically जो forest fire की सबसे बड़ी कारण है, जो dry woods हैं spread की जाती हैं, dead leaves are there, dry grasses are there, weeds are there. This mostly trigger, अगर fire कहीं भी broke होती है तो spread काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, right? And in Uttarakhand, the lack of soil moisture is also being seen as a key factor of the forest fire in India. So if it is being asked in examination, कौन से ऐसे factor है जो forest fire को promote करते हैं, so you can pick these options. You can see the images how the forest fire actually look. If it cover, it go very dense and it can expand into x square number of kilometers. जहाँ पे अभी सरिस्का की बात करें almost 10 square kilometer तक expand कर दी गई है.
Now, Sariska Tiger Reserve, if you want to know briefly about this is located in the Aravali Hills, something again important for the prelims examination. And it has a population of tiger, leopards, nilgai, sambar, cheetal, and etc. And this is the first reserve in the world with successfully relocated tigers, right? And it is an important biodiversity area in the northern Aravalli reported with the wildlife corridor. और ये tiger project का part बनी थी 1978. So these are some of the factual information that you must know about the Sariska Tiger Reserve. Now the other news that is India seeks closer BIMSTEC partnership, something again important for General Studies Paper 2, bilateral regional grouping and agreement involving India's and affecting India's interest. So recently, while addressing the ministerial meeting of the BIMSTEC, India के तरफ से जो इंडिया के foreign minister, he has talked about the cooperation and connectivity, talked about getting closer to the cooperations and connectivity among the members. BIMSTEC stand for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. It's a very important platform for a country like India, especially अगर इस region में बात करें ईस्ट एशिया में तो काफ़ी important platform है. BIMSTEC summit has drawn a global attention because of its participation. जहाँ पे म्यांमार की अगर बात करें, it has actually not participated because internationally ये देखा गया कि जब से military takeover हुई है तब से जो representation है म्यांमार की वो अच्छी तरह से नहीं रही है. So this is again a concern that has been raised. Now creating supply and value chain is again a concern. So India's external affairs minister has said that we need to work upon creating a supply chain. इस तरह की supply chain हो, एक value chain हो जो कि prevent करे हमें external shock से. So because of the unpredictable situation in the world, and even if you want to quote an example, आप यहाँ पे recent में जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, राइट, उसको भी आप कोट कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दे वॉन्ट टू क्रिएट अ सप्लाई चेन और वैल्यू चेन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे डोमेस्टिक चीज़ों को इम्पैक्ट ना करे. So the member country need to broaden and deepen the cooperation under the BIMSTEC. And India said that there is a need to have more effective and fast-paced cooperation between all the member countries of the BIMSTEC. Now, landmark achievement है इस टाइम पे जब मीटिंग हो रही है. BIMSTEC meeting was held a day before the BIMSTEC charter was about to be adopted. ये charters जो हैं, this will give the leaders, the member countries to accept and adopt the BIMSTEC charter on the transport connectivity, something very important which will reduce the logistic cost and indefinitely include the state-of-art technology in the transport connectivity. So the charter of the BIMSTEC plan to have a transport connectivity and expected to boost trade among the member countries. BIMSTEC की members की अगर बात करें कौन कौन से members हैं, that include India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, म्यांमार एंड थाईलैंड, राइट. म्यांमार की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है जब से म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट है. दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द रिप्रेजेंटेशन एज वेल, विच इज अ कंसर्न फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया एज वेल. नाउ सेंटर undecided on the mixing of vaccines, something which is important for General Studies Paper 2, issues related to development and management of health. So recently, Union Health Minister ने basically Parliament में ये कहा है that there is no decision on allowing of the mixing of the vaccine. COVID-19 की जो वैक्सीन्स हैं, खास करके कोविड में इंडिया में जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन्स हैं, इवन स्पुतनिक भी दी जा रही है. तो इस तरह के भी कोई गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं है जहाँ पे वो दोनों वैक्सीन को मिक्स मैच करे. So there is no plan of mixing the vaccine. As of now, जो इंटरवल है दो वैक्सीन के बीच में वो 12 to 16 डेज के है, 16 वीक्स की है. इसमें भी गवर्नमेंट ने कहा that they are not planning for any change on that, right? Until unless जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके रिकमेंडेशन जब तक नहीं आएगी, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. दिस दे हैव मेड इट क्लियर. सो गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस ऑन द गैप टू बी रिड्यूस्ड बिटवीन 8 to 18 weeks. So government from their end will only take action once the recommendation is coming from the expert committee. So need for adequate scientific data, this is what the government has said. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी भी हमें ज़रूरत है कि जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशंस है, जिसको NACP भी कहते हैं, दिस हैज़ रिकमेंडेड ऑन द वैक्सीन मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन एट प्रेजेंट. और अभी इन्होंने कोई डेटा भी नहीं दिया. दे हैव नॉट सजेस्टेड, दे हैव नॉट रिकमेंडेड टू गो फॉरवर्ड विद. द रीजन बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट डिसाइडेड टू मिक्स एनी ऑफ द वैक्सीन्स. नाउ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द मिक्स्ड वैक्सीन्स की अगर बात करें, सो इंडिया के जो नेशनल ड्रग्स रेगुलेटर है, दैट इज सिडको, ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, they have granted the permission to conduct the clinical trial for the administration of the mixed vaccine regime
right? And the Christian Medical College Vellore is conducting the phase study of the Covishield and Covaxin, जहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी की बात की जा रही है और मिक्स्ड वैक्सीन के क्या रिस्पॉन्स होते हैं वो भी देखी जाएगी. टू सम एक्सटेंट द कंट्रीज जिन्होंने एस्ट्राजेनिका और इस तरह के जो स्पुतनिक की वैक्सीन हैं, इवन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अगर मिक्स किया है तो सीन दैट वहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी देखने के लिए मिले हैं. फीवर बढ़ी है, लोगों की हेडेक्स बढ़ी है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी अराइज हुए हैं. सो फॉर टाइम बीइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट लुकिंग फॉर एनी कंसिडरेशन इनटू मिक्सिंग ऑफ द वैक्सीन्स. Now, moving to the editorial part of the day, that is Unreformable Criminal Justice. This particular editorial is going to be important for General Studies Paper 2 in Mains. That is Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from its Design and Implementation. So under this editorial, I'll be simplifying this editorial by three important subheads. That is Problem with the Criminal Justice System, Accepting Issues, Conclusion, और पूरी एडिटोरियल की जो थीम है दैट टॉक्स अबाउट द नीड टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. तो थोड़ी बैकग्राउंड की अगर बात करें, इंडिया के जो क्रिमिनल जस्टिस रिजीम है दैट इज बेस्टेड विद द प्रॉब्लम, जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक की बात करें, जो इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उसके बावजूद जो ह्यूमन साइकी है विद रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज समथिंग विच इज वेरी टेंस एंड पीपल आर नॉट इंक्लाइंड टू मूव टुवर्ड्स द वे where they find traditional way to be going in a longer run, right? So much like we have learned with the pandemic, that must learn with such problem as well, right? तो यहाँ पे जो justice system है उसकी जो खामियां हैं, जो कमी है, जो जिस तरह से स्लो प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है चीज़ों के, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे जस्टिस सिस्टम और जस्टिस डिलीवरी में भी दिखी है. नाउ प्रॉब्लम विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कुछ सबहेड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6 तक डिसाइड करूंगा कि डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं. सो द फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द डिस्पोजेबल ऑफ द पेंडिंग केसेस. इंडिया हैज ऑलमोस्ट 4.4 करोड़ ऑफ द केसेस विच इज पेंडिंग विद द जुडिशियरी. Being the largest democracy in the world, we have 4.4 करोड़ केसेस. और अगर एंटिसिपेशन की जाए जिस पेस में अगर कंट्री डिस्पोज कर रही है तो 400 ईयर्स लगेंगे इस पूरे केस को डिस्पोज ऑफ करने में. एंड इट इज अनलाइकली दैट दिस प्रॉब्लम विल गो अवे एनी टाइम सून, राइट? दिस इज व्हाट अभी जिस तरह से पेस है उससे एक्सपर्ट ने कहा है कि इतने टाइम लग सकते हैं. सेकेंड, द जस्टिस मैकेनिज्म विल रिमेन इनएक्सेसिबल टू द मार्जिनलाइज्ड ऑफ द सोसाइटी. अगर दूसरे शब्दों में कहें दैट द फोकस ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज रेदर बीन इन कैपेसिटी बिल्डिंग. जो मार्जिनलाइज्ड है वो अभी भी वनरेबल है विथ रिगार्ड्स टू देयर सोसाइटी, एंड दीज marginalization and this capacity building which is they deprived of is inevitable in the context that things are going. The third is the problem with the abuse of power with the police. The police as an institution is not functioning well. जो colonial mindset है एक institutions की that has created a persistent problem in the mind of the people, and it determine and govern the manner in which the police discharge their function. Police आज की डेट में जो छोटे शहरों में क्या है, they do not take an FIR, a first information report जो है that is not being registered for the poor, and they are misguided in their functioning also. So the level of the constitutional provisions जो हैं, जो safeguards दी जाती है हर एक इंडिविजुअल को, उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से पुलिस is abusing their power as well. फोर्थ इज अ क्राइम प्रिवेंशन, जहाँ पे ये बताया गया है कि एक यूटोपियन गोल, एक ऐसी गोल है जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट मानी जाती है. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ क्राइम प्रिवेंशन एक यूटोपियन गोल हो सकती है इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए, राइट? सो क्राइम प्रिवेंशन की अगर बात करें, अचीविंग 100% ऑफ द सक्सेसिव इन द क्राइम प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट? इनिशिएटिव सच एज कम्युनिटी पुलिसिंग और ये इस तरह के जो मैकेनिज्म है दैट हैज गिवन अ क्राइम प्रिवेंशन, बट जो डिलीवरी है उसके जो रिजल्ट्स हैं दैट इज स्टिल नॉट कंक्रीट. सो वी नीड टू कंसिडर द फैक्ट दैट utopian goal like criminal prevention is not going to work. We have to be there in terms of making people aware that how things is actually function. Now fifth point is the diversionary principle, जहाँ पे offenders हैं उनको materialize करने की ज़रूरत है. इवन जो बहुत सारे लॉ कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है नॉन जुडिशियल मेजर्स के लिए, जहाँ पे पनिशमेंट इज अगेन समथिंग विच इज नॉट इफेक्टिव इन अ वे, राइट? सो वी नीड टू हैव थिंग्स मेटेरियलाइज इन अ वे दैट वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग द प्रिजनर्स. अभी अगर कस्टोडियल पनिशमेंट्स की बात कीजिए, कई ऐसे डेथ्स भी रिपोर्ट हुए हैं. सो दिस इंस्टीट्यूशंस नीड टू वर्क, और ये इस तरह की मेजर्स लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को ताकि एक इफेक्टिव रेजोल्यूशंस आए. एंड इवन
जो खास करके कस्टोडियल डेथ है या फिर जिस तरह से ट्रीट की जाती है नॉन कस्टोडियल मेजर्स में, दैट कुड बी इम्पार्टेड. Now, sixth is a dirt and the reliable state responsibility data in terms of the data collections, maintenance and analysis mechanism. अभी रिसेंट में कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था किस तरह से गवर्नमेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिप्लेस कर रही है, एंड दे कमिंग विद आयरीज, ऑल अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ये सारे डेटा उनके पास होगी, विच इज अगेन रेज्ड अ कंसर्न. तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो सारी चीज़ें जो डेटा मैनेज की जाती है, दैट शुड बी टेकन द प्रायोरिटी, राइट. और एनसीआरबी मार्क द डेटा टू द एक्सटेंट फॉर दिस कलेक्शंस, or methodology that is being adopted by the report can be criticized on a multiple ground. So these are some of the important issues that definitely need to be looked upon by the institutions and by the government. Now, accepting issues की बात की गई है. अगर accepting issues की बात करें तो problem जो है that is assuming likely to have favorable impact, चाहे वो institutional reform हो या उसके response की बात की जाए. एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जो इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है दैट कैन नॉट गारंटी एन एक्सेस टू जस्टिस, राइट. द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज टू अप्रोच एंड ऑटोमेटिकली शिफ्ट इन बिल्डिंग द कैपेसिटी, and in such section they have to tap the criminal justice system. We need to make people such trustworthy and even impart such trustworthiness in the institutions that they should trust the level of function of our country. भाई ही ऐसे लोग हैं जो deprived हैं अभी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से डिलीवरी मैकेनिज्म को लेकर. So these accepting issues also need to be consideration so that the exact management functioning in our country, the institutional functioning country should have a full-fledged commitment to the betterment of our society. Now, conclusions की अगर बात करें, any project aimed at criminal justice reform must instead accept, and we have the assumptions, only then there can be shift in the discourse of bringing about the holistic reform in the criminal justice system. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने रिकमेंडेशंस हैं जो रिसर्चर ने, एक्सपर्ट कमिटीज़ ने रिकमेंड किए हैं, दैट मस्ट बी मेड टू कंसिडर द प्रॉब्लम एंड दैट शुड बी रियलिटी, सो दैट एग्जैक्टली द जस्टिस शुड बी डिलीवर इन टाइम एंड जस्टिस डिलेड इज कंसिडर्ड टू बी द जस्टिस डिनाइड. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answer of yesterday question. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is C. टुडेज MCQ, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के बारे में आपको बताना है जो कि रिटेल पेमेंट में काम करती हैं. दोज एंटिटीज आर कंट्रोल एंड बाय द इंडियन सिटीजन with at least 3 years of experience in the payment segment or the promoter of NUE, that is new umbrella entities, and no foreign investment is allowed with the existing guideline. So what you have to do, you have to check for the correct option and just make yourself aware about this type of terms that is coming in the news. Second question of the day, that is electoral bond. All nationalized Indian banks are authorized to issue in cash bond were valid for 15 days from the date of issuance, and these bonds are remittable on the bank of the designated account of the political parties. So do check the correct answer. This is something that can be again important for your prelims examination. So this was all about for the daily news and editorial analysis of the day, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.